Hello? हेलो। आप सुन पा रहे हैं मुझे? Yes, sir. कल वो linearity का हो गया था। मैंने आपको कल दिखाया था कि that Lebesgue integral for step functions is linear। एक मिनट, इसको क्या हो गया? You have been signed out because you are currently signed in on other device। मैं आपको एक और लिंक फॉरवर्ड कर रहा हूँ, मुझे बताइए। कुछ साइंड आउट दिखा रहा है मुझे।
अब यहाँ से ज्वाइन करिए और वो जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनको भी भाई बोलिए कि यही इस लिंक से वो ज्वाइन करें। आप सुन रहे हैं मुझे? हेलो। आप जल्दी से उनको कहिए ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि यहाँ से टाइम भी हो रहा है ना ये। और ये अब वो फ्री वाला अकाउंट है तो इसमें 40 मिनट से लिमिट है। पहले लिंक से ज्वाइन नहीं करना है, ये जो दूसरी आपको मैंने अब फॉरवर्ड करी यहाँ से आप ज्वाइन करिए। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये वहाँ से यूट्यूब पर भी स्ट्रीम हो रहा है, तो फिर ये अगर किसी को कोई रह गई होगी कोई चीज़ वो वहाँ से देख ले सकता है। फिर आज जो हमारा टॉपिक होगा इट्स अबाउट मोनोटोनिसिटी एंड ऑर्डर कंटिन्यूटी ऑफ Lebesgue इंटीग्रल फॉर स्टेप फंक्शंस। ठीक है। और भी हम कुछ चीज़ें देखने जा रहे हैं, बट दिस विल बी द मेन थिंग जो हम इसमें करने जा रहे हैं। सबसे पहली चीज़ विल फर्स्ट बिगिन विद सम ऑब्जर्वेशंस जो ये हमें लेटर ऑन काम पे आएंगी। तो आप पहले ये कुछ ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड करिए। If XS mu be a measure space and phi be a step function over this measure space, then ये होता है for every simple function and for every simple function psi मैंने किसी को नहीं रोका। यहाँ वेटिंग रूम में कोई है ही नहीं, तो मैं कौन सी मीटिंग है अभी?
यहाँ कोई अभी है स्टूडेंट्स में से? हेलो, Yes, sir. जी सर। ये कुछ इश्यू हो गया इसको, शायद अब ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडेंट्स। सर मैंने पुराने लिंक से ही ज्वाइन किया मगर मुझे हुआ। पता नहीं वहां से मुझे किसी ने लॉग आउट कर दिया। मैं उनसे बाद में बात करूंगा, अभी आपकी क्लास का टाइम डिस्टर्ब ना, ये सफर ना हो, तो मैं पहले क्लास से कंटिन्यू कर रहा हूँ। So if this phi be a step function, then for every simple function psi, अगर आप इसे देखेंगे, phi times psi, this is a step function. That means product of a step function and a simple function is a step function. अब ये कैसे है, आप मुझे बता सकते हैं कैसे? We know that step function is a simple function which assumes only a finite number of values. ठीक, तो step function भी simple function होता है। अब यहाँ phi is a step function, तो ये एक simple function भी होगा, because every step function is a simple function. So phi will assume a finite number of values. Psi is given to be a simple function, so psi will also assume a finite number of values. So that means there will be only a finitely many possibilities for this product. So this is a function which assumes only a finite number of values, right? और यहाँ से चूंकि स्टेप फंक्शन, सिंपल फंक्शंस, ये मेजरेबल भी होता है, एंड प्रोडक्ट ऑफ टू मेजरेबल फंक्शंस इज अ मेजरेबल फंक्शन, सो दिस इज मेजरेबल आल्सो. That means this product is a measurable function which assumes only finite number of values. So therefore it's a simple function. और यहाँ से चूंकि आपका phi जो है, it's a step function, so this phi it will vanish outside a set of finite measure. और अगर फी वैनिश करेगा, चूंकि ये फी यहाँ प्रोडक्ट में आ रहा है, तो ये प्रोडक्ट भी वैनिश करेगा. So this product also vanishes outside a set of finite outer measure. So that means it's a step function. क्योंकि यही चाहिए होता है ना for a function to be a step function. So आप याद रखेंगे आप आज के बाद, step function times a simple function is a step function. ठीक, एक और चीज, एक और ऑब्जर्वेशन. If phi equal a1 chi sub a1 plus a2 chi sub a2 plus so on plus a sub n chi sub a sub n, let this be a step function in its standard representation, then फिर क्या होगा? Now if I ask you what will be mod of phi, अब में से मुझे कोई बता सकता है क्या होगा ये? मैं assume कर रहा हूँ this is standard representation for phi, for the step function phi. So these are the values, these are the distinct non-zero values of phi, a1, a2, so on up to an. ठीक, अब मॉडुलस जब आप फंक्शन को, जब आप किसी फंक्शन पर मॉडुलस लेते हैं, किसी रियल वैल्यूड फंक्शन पर जब आप मॉडुलस लेते हैं, उससे क्या होता है? ये ऐसे आएगा mod of a1 एग्जैक्टली, क्योंकि मॉडुलस लेने से खाली नेगेटिव वैल्यूज है ना, उनकी साइन एब्जॉर्ब हो जाती है. पॉजिटिव वैल्यूज तो पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ नेगेटिव वैल्यूज की साइन एब्जॉर्ब होती है. नाउ दीज आर द डिस्टिंक्ट वैल्यूज फॉर फी. सो मॉड फी मस्ट बी mod a1 times chi sub a1 plus mod a2 times chi sub a2 plus so on plus mod an times chi sub. ठीक, so this will be mod phi, but यहाँ ये है कि this need not be standard. ये है representation mod phi की, but this representation it need not
be a standard representation of mod phi. रिप्रेजेंटेशन तो है ये, बट दिस नीड नॉट बी अ स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन. इसके एग्जांपल मैं आपको ऐसे देख सकता हूँ. लेट्स सपोज phi is 2 times characteristic function of interval 6 10 plus minus 2 times the characteristic function of interval 20 to 21, then suppose plus 6 times the characteristic function of interval 30 to 31. ठीक है. सो अगर आप इसे देखेंगे, दिस इज स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि यहाँ जो आप स्केलर्स देख रहे हैं, दे आर डिस्टिंक्ट एंड नॉन जीरो. द सेट्स दे आर disjoint. So what about mod phi? Mod phi will be, यहाँ तो कोई चीज नहीं आएगी, so it will be 2 times 6 to 10 में वैल्यू 2 था phi का, और mod phi का भी वैल्यू 2 ही होगा. So it will be 2 times characteristic function of 6 to 10. अब यहाँ देखिए 20 to 21 में जो phi है इसका वैल्यू है -2, लेकिन mod phi का वैल्यू क्या होगा? So it will be plus twice chi sub 2 to 20. Oh, sorry, 20 to 21. ठीक है. Then plus, what about this? This is 6 times the characteristic function of 30 to 31. ठीक है ना. अब अगर आप इसे देखेंगे, दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन. वाई, क्यों है नहीं है स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन? बिकॉज ये जो आप देख रहे हैं 2 and 2 ये डिस्टिंक्ट नहीं है. हाँ, इसको आप स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन में ला सकते हैं, बट इट नीड्स फर्दर मैनिपुलेशन. रेडिली ये स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन में नहीं होता. तो ये मैं आपसे कह रहा हूँ, दिस नीड नॉट बी अ स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन. कुछ केसेस में हो भी सकती है. अगर सपोज कोई नेगेटिव यहाँ कोफिशिएंट नेगेटिव स्केलर अगर इस लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं है, देन इट विल बी सेम एज mod phi विल बी सेम एज phi. तो इन दैट केस तो स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन रहेगी, लेकिन इट नीड नॉट बी इन जनरल. ठीक, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे. एक और चीज, this actually follows from one of the properties of characteristic function. We know that अगर आपके पास if you have chi sub a times chi sub b, आपको पता है किसके बराबर होता है? This is equal chi sub, किसके बराबर होता है ये? इंटरसेक्शन. It's equal chi sub a intersection b. ठीक. और इनफैक्ट इसी ऑब्जर्वेशन के बिना पर आप ना इसे प्रूव कर सकते हैं, जो मैंने पहले आपसे कहा था ना. ये you can give a rigorous proof to this, that a step function times a simple function is a step function. आप इसको प्रूव कर सकते हैं using this. इसको कोशिश ट्राई करिएगा, इसको इस ये यूज करके वो हासिल करने की. ठीक है ना. अब एक चीज आप देखिए, अभी तक जो हमने इंटीग्रल डिफाइन किए थे ना, इंटीग्रल जो हमने डिफाइन किया था फॉर स्टेप फंक्शन, वी डिफाइंड इंटीग्रल ओवर द होल स्पेस. नाउ सपोज जो हमारी डेफिनेशन है, इट टेल्स अस हाउ टू इंटीग्रेट ओवर द होल x. नाउ सपोज instead of requiring integral over the whole x, if suppose I only require integral over this a, where a is a measurable portion of x. मेरी बात समझ रहे हैं आप? जो हमारी डेफिनेशन थी है वो हमें क्या बताती है, हाउ टू इंटीग्रेट ओवर होल x, पूरे x पर इंटीग्रेशन कैसे करनी है, और द full range of integration. Now instead of x, let's suppose we need to integrate over a only, where a is some measurable portion of x. अब इसको आप कैसे अचीव करेंगे?
उसको आप एज डेफिनेशन पहले लिखिए. लेट x, this is definition of integral over a subset or a measurable subset of x. Let x s mu be a measured space. अब अगर ये डिस्कनेक्ट, ये ना मीटिंग अगर एंड हुई तो वापस आप रिज्वाइन करिएगा, कि आपको पता है कि ये पीरियड अकाउंट नहीं है, तो 40 मिनट्स के बाद ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा. लेट एक्स एस में बी अ मेजर स्पेस एंड ए कंटेनर इन एक्स बी म्यू स्टार मेजर. ठीक है, फुल स्टॉप. इफ phi from x into r be a step function, this be a step function, then integral over a of this step function phi d mu, it is defined as integral over x phi times the characteristic function of a d mu. अब देखिए यहाँ से, तो ये ब्यूटीफुल चीज है. यहाँ अगर आप फी को देखेंगे, व्हाट्स फी, इट्स अ स्टेप फंक्शन. व्हाट अबाउट काई सब ए, मैं आपसे कह रहा हूँ इट्स अ सिंपल फंक्शन. क्यों है ये सिंपल फंक्शन? It takes only two values and it is measurable, so it's a simple function. So it is step function times a simple function, so this must be a step function. So this is the integrand जिसकी आप integration कर रहे हैं, it's a step function, and we know how to integrate step functions over the whole space x. So this can be done, ये आप कर सकते हैं, और इसी को हम कहते हैं integral over a of phi. Does it make sense? चूंकि आप यहाँ काई सब a देख रहे हैं ना, तो दैट मीन्स, और ये मल्टीप्लाई में आ रहा है, ये प्रोडक्ट में आ रहा है यहाँ पर, तो जो पॉइंट्स a से बाहर होंगे उनकी कंट्रीब्यूशन क्या होगी टुवर्ड्स दिस इंटीग्रल? जीरो. और जो a में पॉइंट्स होंगे, मतलब a के जो पॉइंट्स हैं, उनकी क्या कंट्रीब्यूशन होगी टुवर्ड्स दिस इंटीग्रल? 5. मतलब सेम एज द कंट्रीब्यूशन ऑफ the integrand in this integral. That is the reason this and this, they are actually same. So integral over a is defined like this. ठीक है ना? अब इसके बाद एक और ऑब्जर्वेशन, ये काफी इंपॉर्टेंट होने जा रही है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज इंटीग्रेशन इज कंसर्न्ड. लेट एक्स एस म्यू बी अ मेजर स्पेस and this is a major space and a contained in x be a subset with mu star a equal to 0. When I say mu star a is 0, so ये खुद ब खुद क्या बनता है? measurable. So this a is measurable. This is this जब आप कहते हैं mu star a is 0, तो it means measurability also, because null sets are measurable. Now if phi from x into r be a step function, if this be a step function, and if phi equal to a sub 1 chi sub a sub 1 plus a sub 2 chi sub a sub 2 plus so on plus a sub n chi sub a sub n be its standard representation,
ठीक, देन इंटीग्रल ओवर ए फी डी म्यू ये किसके बराबर होगा? बाय डेफिनेशन इट्स गोइंग टू बी इंटीग्रल ओवर एक्स फी chi sub a d mu. Now what is phi times chi sub a d mu? Sorry, what is this phi times chi sub a? So this is going to be integral over x of what? अब बताइए what will be? This is phi times chi sub a will be a sub 1 chi sub a sub 1 times chi sub a, then plus a sub 2 chi sub a sub 2 times chi sub a, ठीक है ना? Then plus so on, plus finally a sub n chi sub a sub n times chi sub a, ठीक, d mu. ठीक, now what is this? What is this? Product of characteristic functions. इसको आप ऐसे हैंडल कर सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं इसको as characteristic function of the intersection. So this will be integral over x a sub 1 times chi sub a sub 1 intersected with a plus a sub 2 times chi sub a sub 2 intersected with a plus so on, plus a sub n times chi sub a sub n intersected with a d mu. Now what is this integral? तो बताइए मुझे. This is 0 a1 times mu star intersection. actually in the first place it will be this. It will be a1 mu star a1 intersected with a plus a2. आपकी बात सही है. It will be 0, but जो बाकी है उनके लिए मैं ये कर रहा हूँ. This will be a2 times mu star a2 intersected with a and plus so on, plus a sub n mu star a sub n intersected with a. और ये जो है ना, ये म्यू स्टार्स जो आप यहाँ देख रहे हैं, क्योंकि इसमें आ रहा है ना, अगर आप देखेंगे हर एक सेट जिस पर यहाँ म्यू स्टार लिया गया उसके इंटरसेक्शन में a भी है. This is a1 intersected with a, this is a2 so these are parts of a, these are portions of a. What's a has measure 0, तो इसके किसी भी portion का measure 0 ही होगा by monotonicity of measure. So that means these are all 0, so this is 0. So what is the moral of the story? क्या दिखा रहा हूँ मैं आपको फिर? इंटीग्रल ओवर मोनोटोनिसिटी 0. Exactly. तो इसे आप लिखिए as a remark. Integrals over sets of measure 0 are 0. And I say integral, it means Lebesgue integral for step functions. More precisely आप वही लिखिए. Lebesgue integral for Lebesgue integral for step functions over sets of measure 0 is 0. So if you integrate over a set of measure 0, आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको 0 ही मिलेगा. ठीक है ना? मेरे ख्याल से ये काफ़ी है ये चीज़ें. अब हम आ सकते हैं टुवर्ड्स दी व्हाट, जो हमारा ना पहला यहाँ मेन आज के टॉपिक का जो मैं पहला मेन पार्ट है, ये मोनोटोनिसिटी. इस पर हम आएंगे. ये तो कुछ प्रॉपर्टीज थी इसकी, लेबेग इंटीग्रल फॉर स्टेप फंक्शन. अब हम पहले मोनोटोनिसिटी को देखेंगे. इसको आप लिखेंगे एज अ थ्योरम. ठीक है, आप एक थ्योरम रिकॉर्ड करिए. फिर या इससे पहले बिफोर दिस थ्योरम लेट्स मेक अनदर ऑब्जर्वेशन.
ये भी important होने जा रही है. Let XS mu be a major space and phi from X into R be a step function. Yes, step function. Full stop. Now if phi, if this phi is greater or equal ये वैसे ना ये ऑब्जर्वेशन इतना ही इम्पोर्टेंट है. बेसिकली दिस इज एक्चुअली व्हाट इज मोनोटोनिसिटी ऑल अबाउट. मोनोटोनिसिटी भी असल में यहीं से आती है. अब मैं सोच रहा हूँ इसको एज ऑब्जर्वेशन लिखे या इसको चलिए इसको एज अ थियरम ले लिखे आप, एज अ थियरम, और यहीं से हम फिर डिड्यूस करेंगे मोनोटोनिसिटी ऑफ द इंटीग्रल. Let XS mu be a major space and phi from X to R be a step function. Now, if this phi is greater or equal to 0 almost everywhere, ठीक, then integral phi d mu. When I write integral phi d mu, it means integral over X or the whole space. This is greater or equal to 0. हम पहले इसे प्रूव करेंगे. Assumption है आपकी ये, this phi is a step function with phi greater or equal to 0, और आपको दिखाना है कि that integral phi is greater or equal to 0. Now let's first prove this. Prove. Let phi equal a1 chi sub a1 plus a2 chi sub a2 plus so on plus a sub n chi sub a sub n be a standard representation let this be a standard representation of phi. ठीक, अब चूंकि ये स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है तो यहाँ आपको पता है ये ए आईज जो सेट्स है, कैपिटल ए आईज, ये क्या होंगे. देन चलिए लिखिए, देन ए आईज for I equal to 1 to so on up to n are what? They are distinct and non-zero. Full stop. Further, जो आप यहाँ ये कैपिटल ए आईज देख रहे हैं, they are what? Capital AIs, rather capital AI is actually the set of all those x's in X where phi returns the value little ai for I equal to 1 to so on up to. ठीक है. Now since आपको क्या दिया गया वहां से, since phi it's given to be greater or equal to 0 almost everywhere. ठीक, it follows if for if for some I in the set 1 to so on up to n, it follows if for some I in the set we have
AI लेस देन 0, देन तो फिर क्या होना चाहिए? मुझे आप में से कोई बता सकता है? ये म्यू स्टार ऑफ कैपिटल ए इज इक्वल टू 0. हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि देखिए फी इज गिवन टू बी ग्रेटर और इक्वल टू 0 AE ऑलमोस्ट एवरीवेयर, तो दैट मीन्स जिन पॉइंट्स पर नेगेटिव वैल्यूज आएंगे ना, उन पॉइंट्स का जो सेट है बेसिकली उस सेट का मेजर 0 होगा. Now capital AI is the set where phi returns little ai, and if little ai is negative, and since phi is greater or equal to 0 AE almost everywhere, so it follows mu star AI has to be what? अगर किसी i के लिए ai little ai नेगेटिव है तो उसी i के लिए जो mu star ai है it has to be what? 0. Full stop. Consequently sigma I runs from 1 to n ai times mu star ai. This is greater or equal to 0. Do you agree with this? ये होना चाहिए. देखिए कैसे, देखिए अगर ये लिटिल एआईज, अगर ये सारे पॉजिटिव है, अगर ये सारी लिटिल एआईज पॉजिटिव है, then this quantity will be positive because mu star ai is already non-negative. Sorry, it will be non-negative, this quantity, this product. समझ रहे हैं मेरी बात? अगर ये लिटिल एआईज आपके पॉजिटिव है, अगर ये सारे लिटिल एआईज पॉजिटिव है, क्योंकि ये ऑलरेडी नॉन नेगेटिव है, so this whole quantity will be non-negative and summation will be non-negative, so therefore it will be non-negative. तो इस केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब प्रॉब्लम कब होगी? when some little ai is negative. पॉसिबली प्रॉब्लम हो सकती है वहां पर अगर कोई लिटिल ai नेगेटिव है, बट आप यहाँ वो भी देख रहे हैं ना, इसका एंटीडोट यही अवेलेबल है ना. ये अगर नेगेटिव है तो उसके उसके करस्पॉन्डिंग जो ये फैक्टर आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर वो 0 होगा, तो मीन्स उसकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगी टुवर्ड्स दिस सम. दैट मीन्स इस सम में कंट्रीब्यूशन किन की होगी, किन टर्म्स की होगी जिनमें ये AI पॉजिटिव है. That is the reason this will be greater or equal to 0. But what is this sum? By definition it's actually the integral. This is integral phi d mu. So integral phi d mu is greater or equal to 0. ठीक. अब यहाँ से आप इजीली ना वो बाकी प्रॉपर्टीज, मोनोटोनिसिटी रिलेटेड प्रॉपर्टीज आप डिड्यूस कर सकते हैं. उनको हम लिखेंगे एज रिमार्क्स. If x is let x s mu be a major space, let this be a major space, and phi comma psi be two step functions on this major space x s mu. Stop. Now if suppose phi is greater or equal to psi, then अगर आप इसे देखेंगे phi माइनस psi, यहाँ आप ये लिखिए, इसको थोड़ा सा आप और जनरलाइज करिए. आप लिखिए phi is greater or equal to psi almost everywhere. फिर ऐसे then phi is greater or equal to psi almost everywhere, so phi minus psi, it will be what? It will be greater or equal to 0 almost everywhere. And therefore by the above theorem जो हम यहाँ देख रहे हैं, क्या होगा फिर? We know that if a step function is greater or equal to 0 AE, its integral will be greater or equal to 0. And therefore by the above theorem, integral phi minus psi
d mu, this will be greater or equal to 0. But हमने कल ही देखा integral for step functions is linear, right? So we can use linearity और आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा integral phi d mu minus integral psi d mu, which is this, and this is greater or equal to 0. That is इसे वहां शिफ्ट करिए, integral phi d mu is greater or equal, basically you add throughout this integral psi d mu, तो आपको ये मिलेगा integral phi d mu is greater or equal to integral psi d mu. That means phi greater or equal to psi almost everywhere implies integral phi is greater or equal to integral psi. So that means integral is monotone. ठीक है ना? एक और चीज बाय द वे जो हम यहाँ से हासिल कर सकते हैं, हालांकि ये हो गया बस, ना एक्चुअली ये हो गया। हाँ, अब मैं इसके बाद एक और चीज, एक और प्रॉपर्टी मेंशन करना चाह रहा हूँ, उसको हम लिखेंगे एज अ थियरम। लेट एक्स एस म्यू, क्योंकि ये काफी बार यूज होगी इन आवर सब्सिक्वेंट वर्क। लेट दिस बी अ मेजर स्पेस and phi from x into r be a step function. बाय द वे जो मैंने आज ना वो पहली ऑब्जर्वेशन आपको दिखाई, जिसमें मैंने आपको दिखाया स्टेप फंक्शन phi टाइम्स अ सिंपल फंक्शन psi इज अ स्टेप फंक्शन, इससे ये भी फॉलो होता है कि दैट प्रोडक्ट ऑफ टू स्टेप फंक्शंस इज अ स्टेप फंक्शन। यहाँ जो psi है इट्स अ सिंपल फंक्शन, क्योंकि स्टेप फंक्शंस आर आल्सो सिंपल फंक्शंस, तो फिर इट देन फॉलोज दैट प्रोडक्ट ऑफ टू स्टेप फंक्शंस इज अ स्टेप फंक्शन। ये आप याद रखेंगे, so मैं इसी से फॉलो होता है। दिस इज मोर जनरल देन दैट। अब वापस यहाँ आइए, अब दिस इज अ मेजर स्पेस phi from x to r, it's a step function, full stop. If this phi is equal to 0 almost everywhere, then integral phi d mu, it has to be 0, जैसा कि होना चाहिए, बिकॉज आपको पता है एक लीनियर मैप जो है ना, इट टेक्स आइडेंटिटी टू आइडेंटिटी, है ना? और यहाँ ये होना चाहिए। आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं कैसे? इसको आप दो तरह से जस्टिफाई कर सकते हैं, जो प्रूफ है ना इसका, या तो आप ये वाली थियरम का इस्तेमाल करेंगे, या तो आप इसका सेपरेट प्रूफ भी आप दे सकते हैं। और सेपरेट प्रूफ के लिए आपने ना इस तरह की आर्ग्यूमेंट्स का इस्तेमाल करना है। आप यहाँ इस तरह से लिखेंगे, अब पहले इसकी स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन लेंगे, राइट? ठीक है ना? और ये ए आई दिस, कैपिटल ए आई इज दिस, इसे भी मेंशन करेंगे। फिर आप ये मेंशन करेंगे, सिंस फी इज वहाँ क्या है, इक्वल टू 0 ए ही, so it follows if for some I in this with ai equal to 0, यहाँ मतलब ना बिल्कुल ऐसे ही लिखना है आपको वहाँ, सिंस वहाँ बेसिकली यही इसी तरह की आर्ग्यूमेंट्स है, बस थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी है। जैसे वहाँ है इक्वल टू 0 ए, तो आप ऐसे लिखेंगे इफ ही इज इक्वल टू 0 ऑलमोस्ट एवरीवेयर, इट फॉलोज if for some I in this we have ai not equal to 0, then mu star ai must be 0, and so therefore this sum has to be 0, क्योंकि जहाँ ये ai नॉन जीरो है वहाँ
म्यू स्टार ए आई जीरो होगा। और जहां लिटिल ए आई जीरो है तो वो टर्म तो होगी ही जीरो। मैं कह रहा हूँ जिनमें लिटिल ए आई जीरो नहीं है वो भी जीरो ही होंगी, क्योंकि उस केस में फिर म्यू स्टार ए आई विल बी जीरो, सो विल गेट इवेंचुअली जीरो। तो ये प्रूफ आप खुद लिखेंगे। आप सुन रहे हैं मुझे मैं क्या कह रहा हूँ आपको? सर मेरी बात समझ आ रही है कि किस तरह से ये आपको लिखना है? यही प्रूफ है, ये जो प्रूफ इसके लिए आपने यूज किया था, इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, बाकी आर्गुमेंट सही है। तो यूल गेट दिस। ठीक, ये तो हो गया। नाउ व्हाट अबाउट कन्वर्स? इज द कन्वर्स ट्रू? यहाँ आप कह रहे हैं कि इफ फी इज जीरो ए देन इंटीग्रल फी इज जीरो। द कन्वर्स वुड बी, पहले फॉर्मुलेशन में बता रहा हूँ उसकी, ट्रू है या नहीं वो लेटर ऑन का, वो बाद की बात है। पहले मुझे कन्वर्स बताइए क्या होगी इसकी कन्वर्स की फॉर्मुलेशन। कन्वर्स की फॉर्मुलेशन ये होगी, इफ दिस इंटीग्रल इज जीरो डज इट मीन दैट फी इज जीरो ए? The answer in general is no. तो converse in general is no, is not true. For example, अगर आप देखिए ये example अगर आप लेंगे, let's take this example. अगर आप fee लेंगे, define fee as 2 times the characteristic function of 3 to 4 plus minus 2 times the characteristic function of 6 to 7, right? This is clearly standard representation. What will be integral fee? D lambda, because यहाँ हम ना वो we are in real line with Lebesgue method. What will be this? This will be 2 times the measure of this, which is 1, plus minus 2 times the measure of this. What is the measure of this? Its length, again 1. So this is 2 minus 2, which is 0. So integral is 0, function is not 0. The converse need not be true. ठीक, but if you, अगर ये जो कन्वर्स की जो assumption है इंटीग्रल 0, अगर इसमें आप कुछ फर्दर ऐड करेंगे then you may have a result, और हम वही लिखने जा रहे हैं। इसको भी आप एज थियरम लिखेंगे। लेट x s mu, अब बाय द वे बता सकते हैं व्हाट शुड बी द एडिशनल assumption जिसके तहत फिर आपका कन्वर्स भी ट्रू आएगा? मॉड फिर स्टैंडर्ड होनी चाहिए। हाँ, यहाँ क्या मॉड फिर प्रॉब्लम है? बाय द वे स्टैंडर्ड अगर आप देखेंगे कौन सी प्रॉब्लम है यहाँ पर? -2 नहीं एग्जैक्टली, है इट इज द ऑकरेंस ऑफ नेगेटिव वैल्यूज। अगर आप इसी को किसी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं ना, देन यू कैन हैव समथिंग ना, यू आप कुछ कह सकते हैं इस बारे में। और मैं वही आप इस थियरम में लिखने जा रहा हूँ। लेट एक्स एस पी ओ बी अ मेजर स्पेस and phi from x into r be a step function, or this measure space step. So if phi is greater or equal to 0 almost everywhere, and if integral phi d mu is 0, then phi must be 0 almost everywhere. Proof. Let phi equal a1 chi sub a sub 1 plus so on plus a sub n chi sub a sub n be a standard representation of phi
then what will be integral phi d mu? In the first place, it will be sigma I runs from 1 to n a sub I mu star a sub I, right? इसे आप रखिए स्टार। अब आपको क्या दिया गया है वहां से? आपको वहां से दिया गया है कि इंटीग्रल है 0। तो मैं वो भी यहाँ इनकॉर्पोरेट कर रहा हूँ। देन 0 इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस। इस पर आप इसे रख रहे स्टार। और सिंस आपको ये भी दिया गया है, सिंस phi is greater or equal to 0 almost everywhere, it follows every, ये ध्यान से देखिएगा, every non-zero term in the finite sum, every non-zero term in the finite sum, this कौन सा finite sum? ये finite sum, sigma I runs from 1 to n ai mu star ai। अब समझ रहे हैं मैं किन की बात कर रहा हूँ? I'm addressing the non-zero terms in this finite sum। और मैं आपसे कह रहा हूँ कि every non-zero term in this finite sum must be, आप बता सकते हैं क्या होना चाहिए? Must be, क्या इसकी कोई non-zero term नेगेटिव हो सकती है? ये बताइए मुझे। No, sir. नहीं हो सकती। So every non-zero term must be what? Positive. नहीं, positive नहीं, non-negative। सर जीरो भी मत हो सकती क्योंकि हमने स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन ली है तो। नहीं, अगर ना ये आप गलत कह रहे हैं। हाँ, सॉरी, क्योंकि मैं पहले यहाँ कह रहा हूँ ना non-zero, और non-zero means it has to be positive। आप सही कह रहे हैं, must be positive। It must be positive। आप इसी को देखिए, आप मुझे बताइए क्या मिलेगा आपको। इन व्यू ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन, स्टार जो है, इसको हमने ऊपर स्टार रखा है, इट लीड्स, बताइए कहाँ क्या मिलेगा आपको स्टार से अगर आप ये ऑब्जर्वेशन ध्यान में रखेंगे। स्टार में आप देख रहे हैं कि दिस सम इज जीरो और फिर सारी 0, पॉजिटिव और यहाँ आप कह रहे हैं कि अगर इसमें कोई नॉन जीरो टर्म है, दैट नॉन जीरो टर्म हैज टू बी पॉजिटिव, मींस देयर आर नो नेगेटिव टर्म्स, और सम जीरो है, देयर आर नो नेगेटिव टर्म्स, सम इज जीरो, इट मींस व्हाट? एवरी टर्म मस्ट बी जीरो। क्योंकि अगर कोई पॉजिटिव टर्म है, अगर कोई नॉन जीरो टर्म है इसमें, तो वो नॉन जीरो टर्म पॉजिटिव होनी चाहिए, और अगर ये इसमें कोई टर्म पॉजिटिव होगी तो फिर ये सवाल ही नहीं है कि ये जीरो आ सकता है, ये फिर जीरो नहीं आ सकता। क्या मैं सही कह रहा हूँ? सर इसकी अगर कोई नॉन जीरो टर्म आप लेंगे, दैट नॉन जीरो टर्म हैज टू बी पॉजिटिव, बट द सम इज जीरो, सो इट कैनॉट कंटेन नॉन जीरो टर्म्स, तो इसमें सारी टर्म्स जीरो होनी चाहिए। मीन्स, so it leads to this, it leads to this, ai mu star ai is 0 for all i's, for all values of I from 1 to n। अब this is 0 means, और चूंकि आप स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन ले रहे हैं तो दैट मीन्स ये 0 होने चाहिए। ai's cannot be 0 because you are using standard representation, so that means what? Mu star ai's are 0, so that means this phi is 0 ae। Consequently, phi is 0 almost, मतलब जिन सेट्स पर
इनका SV की नॉन जीरो वैल्यूज आ रहे हैं ना, एंड दो सेट्स आर प्रिसाइज दीज AIs, और यहाँ से फॉलो होगा कि म्यू स्टार AIs इज जीरो। दैट मीन्स इन सेट्स पर नॉन जीरो वैल्यूज आ रहे हैं, उन सेट्स का मेजर इज जीरो है, सो दैट मीन्स फी इज जीरो ऑलमोस्ट एवरीवेयर। सो अगर नॉन नेगेटिव स्टेप फंक्शन का इंटीग्रल जीरो है तो वो स्टेप फंक्शन क्या होना चाहिए, इट हैज टू बी जीरो ऑलमोस्ट एवरीवेयर। ये भी आप देखेंगे, इसका भी हम काफी इस्तेमाल करेंगे लेटर ऑन, पहले ना इसीलिए ये करके रख रहा हूँ। लास्ट ईयर मैंने ये कुछ चीजें एक्सरसाइजेस देखी, लेकिन फिर मैंने ये भी ऑब्जर्व किया था कि ज्यादातर स्टूडेंट्स ने ये ट्राई भी नहीं की थी ये चीजें। तो अभी इस मीटिंग में कितना टाइम है? आपको इसके बाद कोई क्लास है? 3 बजे। कितने बजे क्लास? सर अभी लिंक नहीं आई लेकिन क्लास है आज। किसकी क्लास है? और वो योगा क्लास? जी सर योगा। चलिए फिर बाकी इंशाल्लाह आप कल ही देखेंगे, ठीक है ना? तो कल हम इसको, अब मुझे बस इसमें एक चीज रह रही थी यहाँ आपके साथ, इसकी ऑर्डर कंटिन्यूटी डिस्कस करनी थी ऑफ Lebesgue इंटीग्रल फॉर स्टेप फंक्शंस। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप जा सकते हैं, अगर आपको कोई और क्लास है बाकी कल देखेंगे। आपको भी मत ना कल कोई एग्जाम है, हमारे वो 5th सेमेस्टर स्टूडेंट्स का कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम है, नो सर। मतलब हमारी क्लास होगी। या अगर टाइम है आपके पास तो मुझे बताइए, तो वेस्ट नहीं करिएगा टाइम, तो फिर हम कुछ और देखेंगे अभी। क्या करना है? आपकी चुप्पी से मुझे शक हो रहा है, तो मैं आप मतलब झूठे मुझे बोल रहे हैं कि हमारी क्लास है। क्लास होती है 3 बजे। हाँ मैं अभी हो रही है अभी इस टाइम, वो बताइए। सर लिंक नहीं आई लेकिन सर ने बोला था मैं क्लास लूंगा, अभी लिंक नहीं आई उनकी। अच्छा ठीक, तब तक हम एटलीस्ट इसका ना ये स्टेटमेंट देख लेते हैं, ये ऑर्डर कंटिन्यूटी आखिर होती क्या है, ठीक है? इसका भी ना ये बेसिकली ना एक थियरम है छुपा है इसका राज। मैं वही थियरम आपके सामने पहले स्टेट करूंगा, प्रूफ फिर इंशाल्लाह कल देखेंगे। एटलीस्ट स्टेटमेंट आपके जहन में रहेगा, जिसे आप लिखिए एज अ थियरम, एंड दिस थियरम इज known as the, basically it gives sufficient evidence of this order continuity of the integral. This is theorem, and this actually pertains to order continuity of the Lebesgue integral for step functions. इसका स्टेटमेंट मैं पहले लिख रहा हूँ। Let X S mu be a major space ठीक, and phi n running from 1 to infinity be a sequence of step functions. So these phi n's are step functions over this major space.
full stop. Now if these phi-n's, if या ऐसे लिखे with सीक्वेंस में कुछ और प्रॉपर्टीज भी है। पहली प्रॉपर्टी phi n plus 1 is less than or equal to phi n almost everywhere। ये तो एक तो ये प्रॉपर्टी है और दूसरी प्रॉपर्टी ये है लिमिट n goes to infinity phi n x is 0 for almost almost all x's in x। तो समझ रहे हो अब क्या हो रहा है यहाँ पर? अगर ऐसा है then integral phi n d mu, these are phi n's are step functions, so you can integrate them, so this makes sense. And theorem says that in the limit these integrals will go to 0। बेसिकली इसमें एक कुछ और भी है, मैं पूरा लिख रहा हूँ इसको। देन इससे पहले भी इसमें कुछ है, मैं वो स्किप नहीं करना चाह रहा हूँ। जो पहली चीज है इसमें वो ये होगी, बेसिकली इट्स एन इमीडिएट कॉन्सिक्वेंस ऑफ द मोनोटोनिसिटी ऑफ द इंटीग्रल फॉर स्टेप फंक्शंस। क्योंकि आप पहले ही कह रहे हैं यहाँ पर कि दैट phi n plus 1 is less than or equal to phi n, so that means integral phi n plus 1 d mu ये जो है phi n plus 1 d mu, it must be what? It cannot exceed integral phi n d mu, right? अब जाके वो जो मैं लिख रहा था ना वो ज्यादा इंटरेस्टिंग बनता है। ये आया समझ कैसे? इसमें तो ज्यादा इलैबोरेट, दिस एक्चुअली ये जो पार्ट ए है ना कंक्लूजन का, ये दिस फॉलोज ट्रिवियली, दिस फॉलोज बाय मोनोटोनिसिटी ऑफ इंटीग्रल फॉर स्टेप फंक्शंस। यही तो हमने ऊपर किया था ना। सो दिस फॉलोज ट्रिवियली, इसमें ऐसा सच उतना कुछ नहीं है। हाँ, इससे कुछ और भी चीजें यहाँ ना इंटरेस्टिंग बन जाती है। देखिए आपके पास इनिशियली क्या थी, यू हैड अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप फंक्शंस, ठीक। अब जो आप ये यहाँ कह रहे हैं ना, जो ए कंक्लूजन का पार्ट ए है विच फॉलोज ट्रिवियली बाय मोनोटोनिसिटी, इट बेसिकली टेल्स अस व्हाट? इट टेल्स अस, अगर आप इसे देखेंगे इंटीग्रल phi n d mu, देखिए इनिशियली यू हैड दिस सीक्वेंस phi n running from 1 to infinity, ये आपको दी गई है वहीं से दैट दिस इज सीक्वेंस ऑफ स्टेप फंक्शंस। व्हाट अबाउट दिस सीक्वेंस? ये इस सीक्वेंस की जो टर्म्स है उनका नेचर क्या है? phi n's are step functions, integral phi n's क्या होंगे? They will be real numbers, so therefore this is sequence of real numbers, ठीक। तो बेसिकली ये जो कंक्लूजन का पार्ट ए है वहां आप कह रहे हैं कि दिस सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स इज व्हाट? क्या है ये फिर? is a decreasing, is a monotonically decreasing sequence।
इसको यहाँ लिखिएगा phi n plus 1 is less than or equal to phi n AE, and this will be true for all n's in the set of natural numbers. और conclusion में भी likewise ऐसे ही, this is less than or equal to this, and this will be true for all n's in the set of natural numbers. ठीक, तो ये जो है ना बेसिकली कंक्लूजन का पार्ट ए जो है, इट टेल्स अस दिस सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंसेस जो होती है रियल नंबर्स की, इनकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, फाइनाइटली और इन्फिनिटली लिमिट एग्जिस्ट्स. थियरम आपको उस लिमिट की भी इंफॉर्मेशन दे दी है, आपको बता दी है व्हाट इज द लिमिट. दैट इज द सेकंड पार्ट ऑफ द कंक्लूजन. द सेकंड पार्ट इज दिस: लिमिट n goes to infinity, integral phi n d mu is 0. ठीक, तो आपको बता दिए कि वो लिमिट जो आप यहाँ से देख रहे हैं कि एग्जिस्ट करती है, आपको उसके भी बारे में भी इंफॉर्मेशन देती है. टेल्स यू दैट द लिमिट इज 0. अब इसमें कुछ और भी चीजें मैं कर सकता हूँ इसको ना ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए. ये 0 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इंटीग्रल 0 डी म्यू. मैंने अभी आपको दिखाया 0 फंक्शन का इंटीग्रल 0 ही होता है. सो दिस एंड दिस दे आर सेम. और ये जो 0 है इसको मैं भी ऐसे भी लिख सकता हूँ, दिस इज सेम एज इंटीग्रल लिमिट n goes to infinity phi n d mu. क्या लिख सकता हूँ मैं इसको ऐसे, बिकॉज इन द लिमिट जो phi n's है दे go to 0. So 0 is limit of phi n's. तो क्या देख रहे हैं आप इसको यहाँ, अगर आप इसको आप देखेंगे क्या हो रहा है. कौन सी चीज हो रही है यहाँ पर? अगर आपने यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस सही से पढ़ी होगी, आपको ये पता होना चाहिए कि दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू. नॉट ऑलवेज लिमिट ऑफ इंटीग्रल इज इंटीग्रल ऑफ लिमिट, लेकिन इस केस में हो रहा है ये limit of integral is integral of limit. So you can commute this limit and this integral. वही हो रहा है ना, इंटीग्रल लिमिट ऑफ इंटीग्रल इज इंटीग्रल ऑफ लिमिट. तो इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं इस थ्योरम को. और इसकी एक और ब्यूटीफुल कॉन्सिक्वेंस है, वो ये है, मैं फिलहाल प्रूफ नहीं दिखा रहा हूँ आपको, मैं बस ना इसकी इंटरप्रिटेशंस आपको बता रहा हूँ. ये भी अपने आप में ना एक ब्यूटीफुल चीज है जो आप यहाँ देख रहे हैं. This follows by monotonicity of integral for step functions, that the sequence of real numbers will be monotonically decreasing, so this limit will exist, and theorem tells you that it will be 0, और 0 को आप ऐसे भी देख सकते हैं. So in a way ये theorem आपको ये भी कह रही है कि that you can commute this limit and this integral. ठीक, एक तो ये है इसकी interpretation. उसमें और इसमें कुछ और भी है. Now suppose you have a situation like this. Now suppose there is a step function phi. This is a step function. और मान लीजिए there is a sequence of step functions phi n's and running from 1 to infinity. This is a sequence of step functions such that, और ये ऐसे step functions है such that these step functions they are increasing. That means phi n is less than or equal to phi n plus 1 for every n in the set of natural numbers. And in fact यहाँ आप AE भी ले सकते हैं. Don't require this thing to happen everywhere. Even if it is true almost everywhere, we are good with it. ठीक है. और इसमें कुछ और भी होना चाहिए. And limit n goes to infinity phi n x is phi at x, and this should be true for mu star almost all x's in x. तो समझ रहे हैं आप क्या हो रहा है यहाँ पर? We have a step function and we have a sequence of step functions, and these step functions they are increasing, because this means increasing, and they are increasing to what? In the limit they are going to phi. So that means these step functions they are going closer and closer to this phi. मेरी बात समझ रहे हैं आप?
यही हो रहा है ना अगर आप इस तरह से लिख रहे हैं। इसकी इंटरप्रिटेशन ये है कि दैट दीज स्टफ फंक्शंस दे आर गोइंग क्लोजर एंड क्लोजर टू दिस स्टफ फंक्शन फी, राइट। अब एक और चीज, अगर आप यहाँ पर यही करेंगे, इफ आई डिफाइन gamma sub n as phi minus phi sub n for n in the set of natural numbers. So gamma sub 1 will be phi minus phi sub 1, gamma sub 2 will be phi minus phi sub 2 and so on, ठीक। अब चूंकि आपको पता है यहाँ पर phi n में क्या रिलेशन है, phi n is less than or equal to phi n plus 1, आप मुझे बता सकते हैं यहाँ क्या रिलेशन होगी। दिस इज माइनस phi n, माइनस से आपको पता है दिस विल रिवर्स, तो क्या होगा, gamma sub n plus 1 will be, sorry, it will be less than or equal to gamma sub n, होगा या नहीं। so they are decreasing almost everywhere। और क्या है ये gamma sub n, gamma sub n चूंकि gamma sub n is difference of two stub functions, difference of two stub functions is a stub function, so this is a stub function, ठीक। what about the limit, what about this, what about limit n goes to infinity gamma sub n, gamma sub n is phi minus phi sub n, phi sub n's in the limit they are going to phi, so phi minus phi sub n in the limit will be 0, so gamma sub n's in the limit are, the limit of gamma sub n's is 0, so that means all the requirements of this theorem are met। अब देखिए ये theorem अप्लाई करने के लिए क्या चाहिए आपको, you require a decreasing sequence with decreasing sequence of stub functions with limit 0, मतलब going to 0 rather decreasing to 0, so this is applicable। तो आपको क्या मिलेगा, कंक्लूजन का आप ये वाला पार्ट इस्तेमाल करिए, बी पार्ट, आपको मिलेगा लिमिट ऑफ इंटीग्रल्स ऑफ gamma sub n मस्ट बी 0, ठीक। तो अगर आप ये थ्योरम इस्तेमाल करेंगे आपको ये मिलेगा एज अ कंक्लूजन, देन दिस लिमिट n goes to infinity of what, of integrals of gamma sub n, this must be 0, that is limit n goes to infinity, अब लिमिट ऐसी ही वापस इंटीग्रल, व्हाट्स gamma sub n, gamma sub n is क्या, हाँ ये, it is phi minus phi sub n, so therefore it will be phi minus phi sub n d mu, right, and this is equal limit n goes to infinity। अब यहाँ ये जो इंटीग्रल ऑफ डिफरेंस है आप यहाँ लिनियरिटी यूज करिए, लिमिट को कुछ नहीं करना, लिमिट बाहर है, अंदर आप देखिए यहाँ पे लिनियरिटी यूज करिए इंटीग्रल की, सो दिस इज इंटीग्रल phi d mu माइनस, और ये किसके बराबर है, द लिमिट इज 0, सो दिस इज 0। अब यहाँ दिस इज फर्दर इक्वल, नहीं अब इक्वल नहीं आएगा, मुझे लिखना चाहिए दैट इज दिस इज 0 मीनस दिस इज 0, बस ये असल में सेम है, इंटीग्रल phi n, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं बस इंटीग्रल की लिनियरिटी यूज कर रहा हूँ, सो दिस इज 0। अब देखिए लिमिट इज ओवर n, इसमें n नहीं है, सो यू कैन रिलीज दिस फ्रॉम लिमिट और इसको आप वहां ले सकते हैं टू दी राइट साइड, और जब आप ऐसा करेंगे आपको क्या मिलेगा, वहां माइनस साइन मतलब इन्वॉल्व हो जाएगी, लेकिन यहाँ भी माइनस साइन है तो वो कैंसिल होगी, सो आपको इवेंचुअली ये मिलेगा लिमिट n goes to infinity integral phi sub n d mu is integral, इसमें n नहीं है, लिमिट इज ओवर n, तो यू कैन रिलीज दिस फ्रॉम लिमिट, सो दिस विल बी सिंपली इंटीग्रल phi d mu, ठीक। अब इसे आप देखिए, यहाँ मैंने आपसे कहा था phi n's are going closer and closer to phi, और यहाँ आप देख रहे हैं कि इनके जो इंटीग्रल्स है, इन phi n's के जो इंटीग्रल्स है, दे आर ऑल्सो गोइंग क्लोजर एंड क्लोजर टू phi, बिकॉज in the limit
these integrals are integral phi. So that means what? That means अब ये ना एक important चीज यहाँ हो रही है. These are going closer and closer to phi. अब जब आप इन पर integral apply कर रहे हैं यहाँ से इन पर भी और इस पर भी, the integrals are also going closer and closer. इसका मतलब ये नहीं है कि that integral preserves closeness. And if something preserves closeness, it must be continuous. That is the reason मैंने इस theorem को कहा है order continuity. This actually leads to order continuity of integral. Because आप यहाँ से देख रहे हैं कि that in a way integral preserves closeness. If phi's are close to phi, their integral will be close to phi, integral phi. So integral preserves closeness. ठीक. और एक और चीज जो हम करते हैं, अगर आप यहाँ ये भी करेंगे, चूंकि आपको पता है कि that this phi is actually phi is also the limit of phi ends, तो यहाँ पर भी आप वही कर सकते हैं जो अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था. इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इंटीग्रल ऑफ लिमिट phi and dv. तो फिर से वही, यू कैन कम्यूट लिमिटेड इंटीग्रल. लेकिन ये आपको उस चीज से डिस्ट्रैक्ट नहीं करनी चाहिए जो ना इसका एक्चुअल पर्पस है. एक्चुअली इट टेल्स यू दैट if phi ends are going closer and closer to phi, then integral phi ends will also go closer and closer to integral phi. That means integral जो है ना, it does not disturb closeness. If two things are close, integral apply करने के बाद भी वो close ही रहेंगी. And this is what is the essence of continuous mappings. So that means integral में भी एक continuity type चीज है वहां पर. That is the reason हमने इस theorem को कहा है. Otherwise आप सोच रहे होंगे ना कि इसमें ये continuity जैसा क्या है. This justifies this continuity in this. अब proof हम कल देखेंगे. ये बहरहाल ये भी ना, ये काफी कल मुझे इसमें भी ना टाइम जाता है. अदरवाइज अब चलिए आज ही हो गया है इतना, यहाँ तक तो ये हो गया. अब मुझे कल बस इंटरप्रिटेशन मैंने आपको सारी दी. अब ये वहाँ यूट्यूब पर भी आपको मिलेगा, आप वहाँ से इसको आप देख सकते हैं और कल मैं आपको इसका प्रूफ दिखाऊंगा. ठीक है, अभी आप जा सकते हैं. अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछिए, अगर है कोई क्वेश्चन. है कोई क्वेश्चन? डिस्कशन होना चाहिए. पता नहीं आपको क्या प्रॉब्लम है. चलिए ठीक है फिर इंशाल्लाह अब हम कल. है कोई क्वेश्चन?